by Dr. Akhilesh Gupta, Senior Advisor at the Department of Science and Technology and Secretary to the Science and Engineering Research Board. I request Director Sir to welcome Dr. Akhilesh Gupta with a bouquet of flowers. One huge round of applause for Sir. Thank you, please. Offer garland to Masters. We are very privileged and certainly happy to have Dr. Akhilesh Gupta ji with us today, and who is not only a researcher or scientist but also a strong administrator. And today he is holding one of the very, very important positions, especially related to research and development community. So being an NIT, we need to understand how our young faculty colleagues and students carry out research, supported funding, and future development of the nation. So probably the main agenda of today's talk is on National Research Foundation, which is a new term to all of us. Very honestly, even I do not understand bit of NRF. Overall I know, but today I am very confident during the end of today's talk, I will be more clear about my understanding about NRF. Without further delay, I request Dr. Akhilesh Gupta ji to come to dais and please start with it. Over to you, sir. Thank you. First of all, thank you so much. It's an honor to be here. It's like I've been planning to come here the last so many months, and that's how I did not make it. Today it happens to be in this job. So, this is something which is game changer in the country. I'm sure many of you were there in the education and research for a long time. Some of the young places, students, the young faculty here, and I see my friend Tarun Jain is also here. Thank you, Tarun, for coming here. This has been the news for some time. The National Research Foundation was approved by the Cabinet in the month of June, and then recently both the houses of Parliament have cleared the NRF bill, and it has now become Act. Why all this is required? Why government should do so much of institutional work for the setting up a research mechanism? And then, as directors have mentioned, that most of us are unaware what is happening at the national level, how it's going to impact us, and what benefit we can get out of this national initiative. Today, I'm going to present some of the data and some of the issues which I am sure many of you must have seen for the first time. In India, in fact,
India is one of the countries which has very strong research and academic ecosystem in the country. We have government setup. This is the government agency. These are the departments which are working in mission mode. Recently, Chandrayaan 3 was news. So the department has created the world of atomic energy. These are strategic departments. They work for some focus area, very strategic areas like Chandrayaan or Mangalyaan or something, or even atomic energy works on nuclear power and reactors and all, and similarly DRDO works on the defense research and so on. We also have non-strategic body like CSIR. We have funding agency like GST, DBT and MOES, which provides funding to the researchers in the country. And then we have academic research like ICMR, ICA and all. Then we have industrial research, we have line ministry supporting research at the state level also and the research in the NGO. So a range of agencies working for R&D in the country. These are government labs. CSIR lab, ICMR lab, or all the labs you might have seen, but here they have. There are something like 609 research labs in the country. You will be surprised that there are 27 departments in ministries, government. They are hosting these research labs in the country. Of course, there are 10 departments which are the main funding departments. There are 1,254 degree awarding institutions and 1,088 universities and 163 institutions of national importance. And IT is one of them. 45,000 colleges, 4.31 crore students, and 16 lakh teachers. This is the range. India is the second largest education system, higher education system in the world. These are numbers I think you all be knowing: central university, state university, private university, and deemed university. This figure you please remember: state university 464 and private state university 443. Put together 900 plus state universities. I am sure many of you know that private universities are the state universities. And we see number of states. In fact, Rajasthan has the largest number of universities in the country. The one state is the largest. Now, India, in fact, in recent years, and over a decade of time, has made some outstanding progress in science and technology innovation. Our gross expenditure on R&D has gone 3 times. We are third largest in terms of number of publications. Second largest, I already mentioned, STEM graduates. Third in terms of number of PhD. Third in terms of unicorn, and third in terms of startup. Why third? We have 2 very big giants ahead of us: US and China. It's very difficult to defeat them. Very big size. In fact, when we see India third position in most of them, we are way behind the second.
this animal named China is really making a big impact on the entire process. And the way they do everything is like it's not sometimes ethical also. I will talk on this issue at length. But US is definitely much ahead of India, and for good reasons. They have a lot of money. They have a lot of other resources, and that's why they are considered the best, best country for the science and technology. Kentucky made good progress even in some other areas. Even in terms of quality, we are 9. We are 13, 5 years back. Quality, research quality in terms of how many of you publish in high impact factor journal, what is the citation in this index. So there also we are making good improvement. We could make good improvement in terms of resident patenting in the country. This is a good development that has taken place. Now, one area where in fact making good progress is the number of women participating in research. Just 10 years back, the number of women getting research grant from agency like SERB and all, compared to men, was 13%, was 3. Just in 2011. This is the number. The latest figure is that now 25% women get this. There is clearly number has gone down. Even in terms of number of women in science, the number has gone substantially high. It was something like 12% some time back, now 18.7%. So, India is making good progress. The global average is 30%. So we need to do a lot in terms of number of women participating in R&D. Again, in terms of Global Innovation Index, we made good progress. We are now 40th position. In the last 5-6 years, in fact, we were 81st position in 2015, and now we are 40th position. So we are making good progress and a good achievement on it. Now, this is one of the gray area of India. Despite making all good efforts, our total number of researchers and the number of researchers per million of population is one of the lowest in the world. 162 is the number of researchers per million of population in the country. This is the concern that we have. And this is the area that I am going to give more elaboration as part of the National Research Foundation. Look at generally it is believed more money, more researcher, more research outcome. It's the relationship. And you can see here, agency like National Research Foundation, US, they spend as much as $8.8 billion. And if you see all the countries in the world, how much money they spend and how much money we spend. SCRB has only 0.1
billion per year. So there is a clear differential between what they do and what we do. Several times. Even, but I'll show you a kind of magic that India is witnessing. So, the magic is very interesting. So, you will learn that we spend less money, we have very less manpower, we have inadequate number of women participating in the research. Yet, how can India be number third in terms of research outcome, number 3 in terms of PhD, number 3 in terms of startup? How? And this is the magic. So you see here, look at the budget. India spent as a whole, I just showed you SERBDC. Here as a whole, $3.86 billion US. USA spent $612 billion. UK also spent good. China spent $515 billion. Researcher, you see, we are 262. Where you number you see, large number of researchers per million of population. But when you see number of PhD, we are equivalent. When you see number of publications, we are equivalent. So this is the magic that we have. The reason is that Indian researchers are the most economical researchers in the world. Most. We can create more out of less. Just now, inside Dr. Badi was showing me some researcher, quantum, one presentation was done just before this. How much money? For 5 years. 5-year research project, the amount of money is 6.7 lakh. क्या निचोड़ोगे और क्या नहाओगे? 6.7 lakh में. How can you have research? And you need one research manpower. उसकी सैलरी 4 लाख तो होगी साल की. तो ये तो मैजिक है कि आप कैसे 6.7 लाख में 5 साल एक रिसर्च प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं. And I know you are getting a lot of money, but उस रिसर्च प्रोजेक्ट का क्या फायदा? आपको 7.5 लाख रुपए भी क्यों लेने? ये सबसे बड़ी समस्या कि हम अपने रिसर्चर को चक्की में पीस देते हैं. When I joined SERB, so I found that average research grant from SERB is 39 lakh rupees for 3 years. This is the average. 99% of SERB grant are less than 80 lakh. You know CRT is less than 80 lakh. So, and the researchers are very smart, I would say. Now, 1 year I am going to complete in SERB. So I interact with researchers. So recently we launched some big program like quantum, the cyber physical system. So one day there was a researcher who had this complaint that he's not getting proper money from SERB. I called him for interaction.
he came along with, so they were a very renowned kind of professor from a very reputed institution. So I asked him, tell me, what kind of proposal you can submit to us, or with what budget? You know, he asked me, sir, ये बताओ कि आपका बजट क्या है? हम तो 10 करोड़ का ही दे सकते हैं और 10 लाख का ही दे सकते हैं. So PIs are actually doing this product generally. You refuse to take money less than this much. Unneeded. Beggars थोड़ा है. I was really surprised आपका मैं जो 6.7 lakh दे चुकी हूँ. अच्छा इसमें ये प्रोजेक्ट हो सकता है. You know, I have several caps on my head. So one cap is. So I have 24 Aussie research students with me, Aussie research fellows with me. They work with me. And they do study on. So we did a study that what is the minimum budget required for a good research? Minimum research. Of course, different category of research will need different. Some research are equipment based, so they need more money. Some are survey based, they need less money. But still, let's say a normal research program, how much minimum money is required? It will turn out that if you make support less than a threshold value, there will be nothing except a report you will receive. In the name of outcome, there will be nothing except a glossy printed report. But if you build too much of fund, then also there will be no substantive work. Again, Parisal, this is the research that our student has done. That in India, the cost of per research paper, per impact factor, is one of the lowest in the world. That shows that actually corroborate what I said. The Indian researchers are the most economical in the world. They can do research with less money, with less resources, and with, in fact, in most cases, again, this is the research that our students have done, that on an average, a good research can be finished in 3 years. A large size project, it needs 5 years. But is summary. So recently, there was an advice from one committee that SCRB should reduce its total funding period to 2 years, from 3 years to 2 years. Because we are waiting too much of waiting period for. Our research shows that this Maggie culture will not work. We are putting pressure on the researcher to finish in 2 years. अरे 1 साल तो इक्विपमेंट खरीदने में लग जाता है. कितने लोग आज देखिए जो लोग रिसर्चर हैं 1 साल तो वो टेंडर दुनिया भर का 1 साल देगा जब तक और रिक्रूटमेंट में लग जाता है. आजकल अच्छे रिसर्चर आपको स्टूडेंट लेते नहीं. 1 साल से निकल गया तो अगर 2 साल में खत्म करने 1 साल लगा. So in fact in many cases
मिसमैच। ये फंडिंग पैसा आपने रखा हुआ है और आजकल नया सिस्टम आ गया है, पैसा आया आपने खर्च नहीं किया, गायब हो गया 31 मार्च को, शून्य। तो आई थिंक मैं फंडिंग एजेंसी हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि हम बच्चे की जान ले रहे हैं, बच्चे की जान ले रहे हैं। एक तरफ तो पैसा कहते हैं अभी लोग, फिर कहते हैं इसकी जो प्रोसेस है बिफोर वो इक्विपमेंट खरीदता है या स्टूडेंट को लगता है तब तक पैसा जीरो, फिर सब्सक्राइब करो। तो मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ सबसे बड़ी कहानी जो होती है कि आई एम राइट नाउ सेक्रेटरी CRP बट मे नॉट बी इन फ्यूचर। सो बेस्ट पर्सन क्या होता है? वो पर्सन वो होता है जो कि प्रॉब्लम बता दे, सॉल्यूशन के लिए वो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैं सॉल्यूशन ही बताऊँ। तो देखिए, ये है फुल टाइम प्रेजेंट रिसर्चर कंट्री वाइज। साउथ कोरिया 8,700 पीपल पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडिया का देखिए 262। ये सी लुक एट द डिफरेंशियल्स, लार्ज डिफरेंशियल। हमारे यहाँ पहली बात तो रिसर्च प्रायोरिटी है ही। तो 3 इडियट ने कह रहे हैं लड़का पैदा हुआ भाई इंजीनियर ना दो, लड़की पैदा हुई गाय से डॉक्टर ना दो, तो कुछ नहीं बनेगा साइंटिस्ट बन जाएगा। सारी चॉइसेस हैं, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, मैनेजमेंट हो गया, MBA कर लिया, सॉरी ये BCom कर लिया, MCom कर लिया, CA बन गया। सबसे आखिरी चॉइस रिसर्च है। आप किसी के पेरेंट्स से पूछ लीजिए। आजकल मैंने सुना है एक चंद्रयान के बाद अभी गया था एक MIT यूनिवर्सिटी में, वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई कितने लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो काफ़ी हाथ उठे, लेकिन सबको लगता है कि वो चंद्रयान 3 में जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको समझना था चंद्रयान 3 इज अल्टीमेट। उससे भी आगे साइंस है भाई। तो ये जो फेक चीज़ें चल रही ना, ये सोशल मीडिया ने पागल कर दिया है स्टूडेंट में। मुझे लगता है या तो मैं एक बार अपने फ्रेंड के यहाँ डिनर पे गया, उनका एक ग्रैंडसन था, वो बाहर नहीं आ रहा, शर्मा रहा। तो उसके फादर ही मेरे फ्रेंड ने कहा, उसके ग्रैंडफादर मेरे फ्रेंड का, अरे अंकल साइंटिस्ट हैं। तो भागता हुआ आया और गले लग गया, कहते कि मुझे ही साइंटिस्ट बनना है। तो मैंने कहा कि क्या बनना चाहते हो? मैं स्पेस में जाऊँगा। वो साइंटिस्ट है, मैं स्पेस में जाऊँगा। तो ये सब जो नैरेटिव हो रहा है ना पूरा, ये बड़ा खतरनाक। Anyway, मैं आगे बढ़ता हूँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये जो इश्यू है, अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग कम हैं, रिसर्चर कम हैं, तो क्या करना चाहिए? रिसर्चर कम है, इसका मतलब ये है कि हमको कुछ रिसर्चर बढ़ाने पड़ेंगे। कहाँ कम है और क्या करना चाहिए? So we have done a very detailed analysis on the researcher in the country. I'm not going to present it. But दिक्कत ये है कि we have serious issues. मैं समझाता हूँ. You know how many engineers come out every year, pass out every year, pass out? Number बताइए. Any number? How many people, how many students get complete
their BTech or BE annually in India. Do you know highest in the world? It is 1.5 million. 1.5 million in the country. But you know, data shows that 60% of this lot is unemployable. They cannot work anywhere because उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता. वो आपको ये स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ, चेक कर लेना. 60% लोग, इंजीनियर्स लोग बैंकों में काम कर रहे हैं, बहुत लोअर डिवीजन क्लर्क में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं. There are many of them, they work for the Amazon company. क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन इनकम्प्लीट है. उस एजुकेशन में कुछ सिखाया नहीं गया. और अभी तो ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया. तो बच्चे आजकल स्विच ऑफ करके कुछ और देखते हैं. ऑनलाइन चल रहा है, टीचर बोल रहा है, सुनना ही नहीं पड़ रहा. हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर एनुअली? कितने डॉक्टर्स बनते हैं? 50,000, 16 लाख 50,000. सो डिफरेंस. डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाई है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो. वहाँ पर कोई तैयार नहीं. एंड आप देखिए, पेरेंट्स लोग 12th किया, कहीं भी घटिया से कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसको बीटेक का, सबको जाते हैं हमारा लड़का बीटेक कर रहा है. उनको ये नहीं पता है कि ये बीटेक करने के बाद क्या करने वाला है. लेकिन डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं. 50,000 डॉक्टर पर ये काट. एग्जैक्ट फिगर इज 57,000. साइंटिस्ट केवल 25,000. 25,000 PhD निकलती है साथ. लेकिन 25,000 साइंटिस्ट नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं. साइंटिस्ट कौन है? जो साइंटिस्ट फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर का टेक्नीशियन. PhD स्टूडेंट्स they are not part of full time equivalent. It is PDF. Most doctorate fellows are the scientists. So PDF is a transition between PhD and faculty. This is a transition. Again, our student has done a wonderful work. I will share also that the output of this PhD student and PDF student and faculty, you'll be surprised to know that the output of PDF per year is highest, more than faculty. But how many PDF are there in India? How many opportunity per year? 25,000 PhD, but only 1,000 PDF. 1:25. And what they do? Again, let me give you a figure. 25,000 PhD, 50% PhD are useless. Again, वो स्पेशल रीजन है, पिताजी ने कहा था कर लेना, शादी होने वाली थी से कर लेना, ये सब रीजन हैं PhD के. एंड अभी तो UGC ने और कर लिया बढ़िया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी नहीं. तो आप लोग PhD होएगा ही नहीं. तो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्वालिटी से. सो ये
रहा है कि 50% PhD are US. Remaining 50% में nearly, this is a figure, national figure I am giving, nearly 2,500 annually apply for PDF outside India. 2,500 apply, but only 800 get. Remaining क्या करते हैं? ये अप्लाई करते हैं नेशनल PDF स्कीम ऑफ SCR में, और कितने को मिलता है? 300, only 300 will get. Remaining 700 are in ICMR, ICR and all. So this is the issue that we have flagged as part of the NRF. We have already taken a decision next year onward. This, I have taken a decision from myself, and it will be endorsed soon, that number of PDF of SCRB is going to increase from 300 to 1,000 next year. This is the area that we, and I tell you, I have got figure gender here, very alarming gender here. That, in most of the cases, PDF out, those students who apply PDF outside India, majority of them are men. Women number is less. Again, for social reasons, they don't want their father is not applying, mother not applying, somebody not applying. They don't go abroad. They want to get opportunity in India, but in India, opportunity is very limited. Also, I'll give you good news that this PDF is now going to be slightly different. And this we have done based on the detailed analysis that was possible. So 300 PDF that you are right now, it is there, it continue as it is. So what is the PDF system? That a student will approach a faculty in some institution, get the endorsement and submit the form for the PDF, and then we decided by ASCR. Now the system will be, apart from the academic person, there will be two more modes. One is the industry mode. So 300 will get to industry mode. The industry and academic person will join and support the student. Another 300 or so will be with the best university in the world. So that kind of really collaboration is done. Whereas industry outside India, university outside India, there the professor in India together will supervise PDF student. So this is the two different modes that we are going to start this next year. Now this is anyway, I think I am not going to detail, but I say this is a different country condition since this is the last 10 years, not much has changed, but India remains where it is. And that's a concern that we have not made much difference. And this is the direction showing that how India should move in terms of, so I am not going to deep into this because this is a little complex issue, how we can increase the number of researchers in the country. One idea is the PDF, but then there are many other ideas. Another idea is the number of women should increase, otherwise. Anyway, let's go further. See, many people don't know the state governments are also working. Some of them are actually having good ecosystem. Some states are really doing very well. And many of them, like, states like Gujarat, like, Karnataka, Kerala, even Maharashtra, even I would say Rajasthan has been doing well in terms of developing ecosystem for the R&D and academic. One tendency that, again I wanted to mention here, I think let me mention after some time when you
appreciate, but I may forget, so I think better I mention now. Because with age, you forget things. So, there is a clear trend that we see now. And you might have heard how many of you must have heard about. There is a scheme called SURE scheme. The CRP started. This is the State University Research Scheme. SURE. We recently launched and where only state universities are allowed to participate. We realized that there is a trend that we see now. That gone those days when government universities used to do better than the private universities. In fact, some of the private universities are doing much better than this government university in research. So there is a clear condition now seen. So now the government university had to compete with the state private universities rather than private universities competing with government. This is a big change. I remember private university used to work for the money. This is the normal thing that all private universities they work for money. They take money from the student and then use for their benefit. And now in recent times they started investing in research and innovation. That is making a big difference in terms of ecosystem change. And this is the R&D statistic we brought out recently. This is the money that India spent on research. 1,27,000 crore annually. This is the money that is. And the DRDO takes away maximum money. Nearly 31%. And the government of states get 18.4, ICR get 12.4 and so on. इनसे क्या होता है कि चैलेंज हमारे गवर्नमेंट में भी आता है. So after the Chandrayaan success, so how much DOS get? 13%. Space, ISRO get 13%. DRDO get 32%. So DRDO gets 2.5 times more than the DOS. So ये चंद्रयान 3 के बाद हल्ला मचा कि इसरो तो बहुत कम पैसे में इतना काम करता है, पर तुम वाइट एलिफेंट बन गए, इतना पैसा लेते हो काम दिखाते हो. ये सब हर जगह होता है कि उसकी कमी की वजह से ज़्यादा सफेद हूँ. ये जो कंपेरिजन है ये होता है. जो गवर्नमेंट मनी जो एक्सटर्नल रिसर्च के लिए आता है, मतलब जो फंडिंग जो है गवर्नमेंट देती है और रिसर्च SCRB और GST DBT और ये पूरे पैसे का केवल 2.5%, केवल 2.5%. सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च. This is again a big imbalance. So आज से 2018 की बात है, प्रधानमंत्री जी के सामने ये प्रेजेंटेशन किया गया कि ये इनइक्वालिटी. तो आप लोगों को दूर से आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, हम लोग करीब से देखते हैं, हम लोग पता है कि वो बहुत छोटी चीज़ों को इतना वैल्यू देते हैं, उनको छोटी कदर देती है. अच्छा ऐसा क्या जाते हैं फिर जीत जाते हैं डिस्कशन में. तो ये जो NRF है, ये मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री में जाता है. ये बात समझ आई कि जो हम पैसा देते हैं
एक्स्ट्रा मीडियल रिसर्च के लिए बहुत कम है। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने मेंशन किया, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, IITs, NITs और प्रिटिजन, ये टोटल फंड का 65% उनको मिलता है और केवल 11% मिलता है यूनिवर्सिटी को। ये एक प्रॉब्लम है जो इनइक्वालिटी आगे भी मैं बताऊंगा। These are the major inequality. 98% of total fund is for intramural research. 82% of the research infrastructure is given to R&D lab and institution of nation. आज देखिए कहीं भी आप ICR, CSIR की लैब में जाके ढेरों इक्विपमेंट पड़े हैं, लैब पूरी फुल है, आदमी नहीं है काम करना है, रिसर्च स्टूडेंट है, रिसर्च स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पास है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो ये है कि जहाँ बरसात होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, और जहाँ जो है सूखा पड़ा वहाँ बरसात होनी चाहिए। तो ये तो ऐसा अलग बातें हैं। तो हम लोगों ने ये एनालिसिस में पाया कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो की इश्यू है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो ऊपर क्यों उठ रही है? इन्होंने इन्वेस्ट किया है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं भी खाली साहब से बात कर रहा था कि कितना पैसा आपको रिसर्च का मिलता है, जो इन्होंने अमाउंट बताया इसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा मिलता है IITs को। सीधी बात है कि आप अपने साइंटिस्ट लोगों से कहो कि चंद्रमा वाली रिसर्च करते हैं और आपके पास धरती वाली रिसर्च का पैसा नहीं है। सीधी सी बात है कि कम से कम इतना तो पैसा दे दो भाई कि हम अपना रिसर्च ठीक से कर ले। ठीक है, आप भला रिसर्च। तो ये जो मैंने बताया कि इनइक्वालिटी इन की फंडिंग, कहीं बहुत ज़्यादा पैसा है, कहीं बहुत कम पैसा है। IITs have been loaded with money. ISC, आप ISC में जाके देखिए, एक एक कमरे में इक्विपमेंट ढेरों पड़े हैं, जो उनके यूजियस वाले जो इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं वो ही काम कर रहे हैं। ऐसे इक्विपमेंट है उनके पास, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज अमेरिका जा रहे हैं, कल जापान जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, इधर उनके। अब यू सी हाउ मनी इज फ्लोइंग इनटू ISC and IIT, and look at the university system, which are एकदम hand to mouth. Since I was secretary to University Grant Commission, I have seen the situation in I had the fortune of going to more than 100 universities. देखा है मैंने जाकर, ऐसी यूनिवर्सिटीज है इनके लैब, केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट एंड पेपर नहीं है। और इनका ये सिस्टम है कि 4 टाइट्रेशंस हो रहे हैं और 40 स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि आधा घंटा तुम करोगे, फिर आधा घंटा तुम करोगे, ऐसे करके दिन भर जाता है टाइट्रेशन। एंड सेम विद द फिजिक्स लैब। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? ठीक है, इंडियन रिसर्चर आर द मोस्ट इकोनॉमिकल रिसर्चर इन द वर्ल्ड, पर वही मैंने कहा बच्चे की जान तो मत लो, कम से कम इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि हम उनको कायदे से इक्विपमेंट दें। तो ये जो इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा इश्यू है कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनइक्वल, एंड जहाँ मैन पावर है वहाँ इक्विपमेंट नहीं है, जहाँ इक्विपमेंट है वहाँ मैन पावर नहीं है। ये दोनों इनइक्वालिटी बात है। तो ये मैंने कहा 65% पैसा NITs, IITs, ICL को मिलता है, एंड केवल 11% यूनिवर्सिटीज को मिलता है। आप देखिए, I have done this kind of survey
इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस बहुत कम। इनफैक्ट IIT में सबसे अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी या इवन एंश्योर NIT में भी ज़्यादा लिंकेज ज़्यादा नहीं। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कहीं वर्ल्ड की विश्वविद्यालय जाइए, हाउ मेनी पीपल हैव ट्रैवल्ड टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज? व्हिच यूनिवर्सिटी यू हैव वन? EPFL and ETS, sorry. सो आपने देखा होगा, आपकी वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटी, आपने सवाल आपने पूछे कि वाई इंडियन यूनिवर्सिटीज डोंट रैंक इवन इन टॉप 500, forget about top 200, don't rank. Why? Is our studies teaching not up to the mark? That is not the reason. The reason is that innovation and technology missing from the university curriculum. We don't have the culture. We continue to work at lower TRL level. खाली रिसर्च करते हैं TRL 3 तक। किसी यूनिवर्सिटी में जाके पूछिए कि कोई TRL 3 के बियॉन्ड काम करता है? Even a top university like GHU and all that we are talking, कहीं कल्चर नहीं है। वहाँ पर मास्टर का काम केवल टीचिंग है। Research and innovation is missing. You go to any top industry in the world, you find research innovation integral part of the industry. And that is the reason why they work from TRL 1 to 9. हम काम करते हैं TRL 1 to 3. And that is why our student, जो मैंने बात कही कि why 50% of PhD students are useless, because उनको सिखाया नहीं जाता कुछ, खाली तार जोड़ना सीखते हैं। तार जोड़ने से इंजीनियर नहीं बनेगा। In fact, स्टेट यूनिवर्सिटीज का हाल ये है कि we do not have funding for research. आपने तो जो बताया कि जितना पैसा 90 में, आपको पता है मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हूँ, आपने जितना बताया पैसा लखनऊ यूनिवर्सिटी को उसका 1/2 भी नहीं मिलता, नॉट इवन 10%। वहाँ पर वाइस चांसलर है रिसर्च फंडिंग का ऑप्शन करता है, चलो 4 लाख की दे दो, 3 लाख की दे दो। ऐसी बुरी हालत है स्टेट में। आपके नेबर में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से देखा है मैंने। जब मैं सेक्रेटरी UGC था तो यहाँ पर जो है एक ही चीज़ में राजस्थान यूनिवर्सिटी आ गया था, नेतागिरी। यहाँ पे नेता विषय मिलने आते थे, दोनों अलग अलग टाइप के नेता। एक पार्ट है प्रो राजस्थान नेता, दूसरा फैक्शन है आउटसाइड राजस्थान है, दो फैक्शन लड़ते हैं आपस में। तो देखिए जो जिस विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी का हाल ये यही इस तरह की नेतागिरी होती है। आपने IIT में सुना कोई नेतागिरी से कि कोई खड़ा होती नहीं, वो लोग अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि काम, जब आपका काम नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? दूसरी चीज़ें ढूंढते हैं, रिक्रिएशन के और साधन ढूंढते हैं, इंटरटेनमेंट के और साधन ढूंढते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमने लोगों को काम नहीं। तो मैं जो मुद्दा आपको बता रहा हूँ वो ये 15 लाख टीचर और इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में केवल 1.25 लाख रिसर्चर। तो जो मैंने बात कही कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एवरी टीचर इज रिसर्चर एंड इनोवेटर। हमारे यहाँ क्या है, 15 लाख में 1.25 लाख रिसर्चर। तो 90% जो है
वो खाली मास्टरी करते हैं। और मास्टरी में क्या है, आप कॉलेजेस में जाइए, मैंने इनको बहुत डीप स्टडी किया है। मुझे आप ये मत समझिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। आप किसी भी कॉलेज में चले आइए, कभी सोच के गाँव में जाकर के कॉलेज डिग्री कॉलेजेस, तो वहाँ पर वहाँ बैठ करके खाली राजनीति की बात होती है। अरे मोदी जी ने ये तो कर दिया, अरे भाई ने ये तो कर दिया, खाली राजनीति। क्योंकि इनके दिन में खाली एक क्लास होती है, तो क्लास ले लिए। अब वहाँ क्या मास्टर है 40 है, क्लासेस 30 है खाली, तो जा करके बस एक क्लास ले लिया और दिन भर नेतागिरी। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि हमने इंडिया में टीचर्स को रिसर्चर नहीं बनाया, बहुत बड़ी एक इश्यू है। Anyway, मैं ये बहुत चीज़ें हैं, लिस्ट है क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, स्किल। ये है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। अब मैं आया हूँ मुद्दे, अभी तक मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये मुद्दा ये है कि मैंने जब मेंशन किया 99% फंडिंग SCRB की लेस देन 50 लाख फॉर 3 years। तो 99% इंक्रीमेंटल रिसर्च होता है क्या। What we are proposing as part of the NRF is going for profound and risk taking। अब ये मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे मान लिया क्वांटम पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये बेचारे 7.5-6.5 लाख फंडिंग ले रहे हैं 5 साल में। तो इनका ये हाल है कि फंडिंग एजेंसी इनको पैसा नहीं देती। क्यों नहीं देती? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस कमेटियों में बैठा हूँ, इसलिए जो रिजेक्ट होते हैं प्रपोजल, अभी प्रियंका का एक रिजेक्ट हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ जो रिजेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो क्या देखते हैं कि कहाँ से है ये, यूनाइटेड से छोड़ो ये ISC वाला इसको दो। तो मैं रिफॉर्मिस्ट हमेशा रहा हूँ, मैं ये इसको अदरवाइज न लीजिए। कल्चर इंडिया की आदमी देख के पीरियड देना। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस एंड ब्लाइंड यूज असेसमेंट, डबल ब्लाइंड। कहाँ से है ये ना पता लगे, हालांकि वो रेफरेंस से पता लग जाता है, कितना भी ना मेरे को पता लग जाता कहाँ से। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये एक अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इन हाउस एक मीटिंग की, तो वो स्वयं बोले ये बात। विज्ञान में प्रॉब्लम क्या है, ये जो लॉबी है ना, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो कमेटी के बैठते हैं और समिट उनमें ये आपस में क्या रिलेशन होता है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। और ये एक और चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ कि ये जो बुढ़े हैं ना, जो अपने पूरे टिका के बैठे हैं सालों से कमेटियों में, तो सबको मैं रास्ता बता ऐसे हैं कि जब आदमी का प्रोजेक्ट आया, नहीं इसने वो दिन नमस्ते नहीं की थी मुझे। तो ये जो कल्चर है ना कि आप कल्चर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव एरिया में जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है। ISC बैंगलोर का प्रोजेक्ट आ गया,
चलो भाई इसको कर दो। NIT MNIT का आ गया, निकालो ये सब बेकार है। मैंने इन लोगों से यही कहा, आज आपके रिसर्च से मैंने कहा, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। दुनिया जाने की आप क्या कर रहे हो। अपने को शेल में मत रखो। अपने को अगर छुपा के रखोगे इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाहर आओ और दुनिया को बताओ कि आप क्या करें। तरीका है इसका, हम लोग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो प्रोफाउंड रिस्क टेकिंग हम कर रहे हैं कि हम जो है यंग लोग रिस्क दे रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट लाओ, बड़ा प्रोजेक्ट लाओ, हम आपके विश्वास करेंगे और हम आपको आगे बढ़ेंगे, चाहे आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी रहो, चाहे आप पैसे की। तो ये एक अलग तरीके का सिस्टम बनाने वाले हैं कि एंड फोकस क्वालिटी रेलेवेंस से हम रखेंगे। नेशनल रिसर्च होगा। ट्रांसलेशन रिसर्च मैंने कहा कि अब TR3 से ऊपर जाना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटोटाइप एंड मार्केट में लाना पड़ेगा एंड इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम कंटिन्यू ग्रांट मोड से इसमें जो सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम कंडीशन अमंग इक्वल्स rather than कंडीशन अमंग अनइक्वल्स। कोई ऐसे कुश्ती में होता है, वजन रखे जाते हैं ना कि 45 किलो का कुश्ती होगी, अलग 55 किलो। अगर मान लिया इमेजिन करो कि सबकी कुश्ती हो जाती है तो क्या होगा? जो हायर वजन वालों को दवा देगा ना, वही हो रहा है कि IIT के सामने आप लोग हल्के पड़ जा रहे हो। तो हम उसको कंडीशन ही हटा देंगे और नया कंडीशन लाएंगे। यूनिवर्सिटीज के बीच में नया कंडीशन, ना कि आप IIT के यूनिवर्सिटी है उसको आप अटेंड करें। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाने वाले हैं, खुलते हैं, ये तो हमने बता दिया। एक बहुत चीज़ें जो है ये हम कर रहे हैं, सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी बना रहे हैं जिस फायदा बना है। तो ये है की फीचर्स। ये एक स्ट्रेटजी बड़ी है जो बन रही है, ऑलरेडी एक्ट बन गया है। 50,000 करोड़ का फंडिंग है अगले 5 साल में, 10,000 करोड़ पर ईयर। अभी फंडिंग 1,000 करोड़ है, तो यानी कि 10 गुना फंडिंग बढ़ने वाली है, जिसमें 14,000 करोड़ गवर्नमेंट का फंडिंग है और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर का फंडिंग है। ये एक अगेन चैलेंज है कि हम कैसे करेंगे। इसमें 1,000 करोड़ इनोवेशन फंड हम बना रहे हैं, जिसमें कई फीचर्स होंगे कि इसमें GFR रूल को हम बाईपास कर सकते हैं। ये गवर्निंग बोर्ड है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनी रिसर्च statutory body is actually headed by Prime Minister. CSIR है एक body और it's not statutory, it is society. And so this is the highest level governing structures created. हम ये करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन करेंगे Tier 1 इंस्टीट्यूशन से लोगों को Tier 2 और Tier 3 में लाएंगे एंड Tier 2 से हम Tier 3 में ले जाएंगे। मान लिया अभी 5 साल से पहला, मान लिया आप कुछ प्रोफेसर लोग आपके यहाँ से, हम उनको ऑफर देते हैं कि भाई आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए आप पड़ोस में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले जाओ, प्रोफेसर होंगे और हम आपको ये सहूलियत देंगे, एक्स्ट्रा ये चीज़ें देंगे और हम आपके अराउंड एक बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को। बड़ा एक प्रोजेक्ट देंगे, उसके साथ आपको कैरी करेंगे और वहाँ जाके बिल्ड करिए कुछ यूनिवर्सिटी। कितने लोग तैयार हो जाएंगे? आप समझते हो कि लोग तैयार हो जाएंगे या कहेंगे नहीं बेकार है ऑप्शन? तो वेरी वेरी एक्साइटेड। तो ये हम करने जा रहे हैं IIT से यूनिवर्सिटी, NIT से यूनिवर्सिटी, हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, लेकिन ऐसे नहीं करें।
मैंने कहा पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मान लिया हम एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया एक किसी एरिया में, साइबर फिजिकल सिस्टम, और आपके जो बेस्ट प्रोफेसर साइबर फिजिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनसे कहेंगे आप उस सेंटर का मैं कोऑर्डिनेटर आपको बना देता हूँ, आप जाइए वो सेंटर वहाँ रन करिए, पैसा हम राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेंगे, लेकिन फ़ायदा आपको होगा क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर बनोगे तो आप स्टीयर, उसमें पैसा हम 15 करोड़ 20 करोड़ दे देंगे, स्टूडेंट रखिए, वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम बिल्ड होगा, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन बना जाएगा। 5 साल वहाँ काम करिए, वापस आ जाइए। ये एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। हम एक नया जो है PDF पूरा एक नया बिल्ड कर रहे हैं, नया PDF हम बनाएंगे। रिसर्च प्रोग्राम है, द लार्ज नंबर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम्स वी आर बिल्डिंग एज पार्ट ऑफ NRF, और ये हम बिल्ड करेंगे अराउंड वर्क फोर्स थीमेटिक एरियाज में। जैसे वी आर टारगेटिंग, जस्ट गिविंग एग्जांपल, टारगेटिंग that 10,000 people will be trained in quantum technologies. The students and they can be young professors, young faculty and what. They will be trained not just in India but abroad. Chair professor हम start करने जा रहे हैं, इसीलिए very biggest in the country. ऐसी chair professor अभी आपने नहीं सुना हो। This is we are going to build chair professor. इसमें खाली चेयर नहीं होगा। अब अभी यहाँ क्या होता है डॉक्टर साहब की, आप जो DST की सॉरी SCRT की चेयर प्रोफेसर है, साइंस चेयर, आप अनाउंस करते ही मेरे पास 40 फोन आने शुरू हो जाते हैं अलग अलग। बड़े बड़े जो डॉन्स हैं साइंस के, डॉन्स हैं, वो सब फोन करते हैं, सर मेरा करा दीजिएगा, मैंने देखिए ये करना। फिर उनके लेटर्स के साथ साथ इतने मोटे मोटे गड्डी आ जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने तीर तोड़ दिया, मैंने आसमान में तारे तोड़ दिए, वो सारी चीज़ें। तो मैंने एक बार एक प्रोफेसर से कहा कि जितने तोड़ने थे तोड़ लिए आपने, अब ये दूसरों को तोड़ने दीजिए। और आप बताएं ये लॉबिंग का सिस्टम, तरुण जी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप साइंस से कनेक्टेड नहीं हैं। तरुण जी मुझे जानते हैं, ये पत्रकार हैं लेकिन साइंस से बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिज्म करते हैं। आज नहीं ये बात मुझे अपने होशो हवास से कह रहा हूँ, आज तक जितने भी साइंस सेक्रेटरीज बने, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ये बात, जितने भी साइंस सेक्रेटरीज बने, जितने भी सेक्रेटरी SCRT वो बिना लॉबिंग के नहीं बने। कोई पीठ खुजलाया उनकी, उन्होंने किसी खुल्लाई है तो खुल्ला रहा है अपनी। ये इस पूरे तंत्र का सबसे विभत्स रूप कि बिना लॉबिंग के कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं एक्सटेंशन से हूँ, मेरा सेवा विस्तार हुआ, तो ही 6 महीने 5 महीने पुरानी बात है। आई वॉज टू रिटायर ऑन 31 मई। तो वो कई डॉन्स का फोन आया, एक डॉन की स्टोरी बताता हूँ। तो एक डॉन का फोन आया कि डॉक्टर गुप्ता आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ से शुरुआत किया थी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेन आप चला रहे हैं, SCRT में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो उन्होंने पहले 10 ऐसे वाक्य बोले जिससे मेरी छाती खुली कि मैं वाकई में और काम कर रहा हूँ। फिर मैं समझ गया कि अब उनका असली वाक्य आने वाला, उन्होंने असली वाक्य बोल दिया। ऐसा है, ये मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ गाइडेंस दूँ कि कैसे करना चाहिए। मुझे हाँ आपके जो है मार्गदर्शन का हमेशा इंतजार रहेगा। फिर उन्होंने असली बात कहा कि एक्चुअली मैं जो है अभी 1 हफ्ते में मंत्री जी से मिलने वाला हूँ, आपके मंत्री जी से मिलने वाला हूँ, और मैं आपके एक्सटेंशन की बात करूँगा।
आप अच्छा काम करें। तो मैं सुनता रहा कि अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप एक चीज़ बताएंगे कि आप मंत्री जी से कितना फ्रिक्वेंटली मिलते हो? पहले नहीं, मैं महीने 2 महीने में तो मिल ही जाता। मैंने कहा मैं रोज मिलता और मुझे एक्सटेंशन लेना होगा, मंत्री से सीधे बोलूँगा कि मुझे कोई एक्सटेंशन चाहिए, मुझे आपकी जो है इस तरह के प्रकार की जरूरत नहीं है, प्लीज़ आप अपने मंत्री से बात करिए। ये खबर फैल गई पूरे सारे डॉन्स के बीच में। अब उसके बाद डॉन्स का फोन आना बंद किया। आई एम द ओनली पर्सन जो doesn't belong to any lobbying element, any lobby. And that's why I don't care about any of these dogs. इन्होंने इनके सारे हथियार खेल कर दिए गए। 3 लड़के हमारे SCRB के, 3 लड़के इन्होंने कब्जा कर रखा। उन लड़कों को ये कहते थे कि तुमको प्रमोशन दिलाएंगे, सेक्रेटरी कुछ नहीं होता है, हम ही रहेंगे, हम ही उसको तुमको प्रमोशन दिलाएंगे। मैंने वो नेक्सस व्यक्त किया, तीनों को मैंने उन काम से निकाल के बाहर निकल दिया और कमेटी का चेयरमैन मैं खुद बन गया प्रमोशन। अब सालों को मैं इनको घुसने नहीं दूँ। यही प्रॉब्लम है कि ये हर जगह पूरे टिका के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि ये देश चला रहे हैं। हमको ये नेक्सस ब्रेक करनी पड़ेगी। The growth of science and technology. इस NRF के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी इसीलिए बनी, ये नेक्सस खत्म करना पड़ेगा। तो देश में आसान नहीं होगा। ये आई नो मेरे कहते ना कि जान के पीछे लोग पड़े हैं, लाइफ डोंट केयर। क्योंकि मैंने उनसे कहा नहीं महानुभाव था, मैंने कहा आई एम नॉट सीकिंग एक्सटेंशन। आपको किसी का मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, तो वाई डू मेक एफर्ट होने से भाई उसको पहले उसको चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो सेक्रेटरी थे वो कहते साहब करा दो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये बात समझिए कि मैंने कभी नहीं कहा कि आपको सच्ची बात बताऊँ, अरुण जी को पता होगा ये बात कि सरकार ने मैंने साफ साफ मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मुझे आज्ञा दीजिए जाने की, मैं हैंग अराउंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। तो ये मेजर चैलेंज जो आने वाला है वो 36,000 करोड़ का कैसे जनरेट करेंगे। हमने इसके लिए ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त डेवलप किया है स्ट्रेटजी। मैंने आखिर में इसलिए कंक्लूजन नहीं रखा है इस स्लाइड का, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई वो सब NRF के एजेंडे में। मैन पावर कैसे बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग इकोसिस्टम में और बदलाव लाएंगे, यंग लोगों को कैसे मौका देंगे, किस तरीके से फेलोशिप एंड पीरियड प्रोफेसर चेयरशिप एंड जितने भी चेंजेस हैं। मैं तो 10,000 करोड़ पर ईयर द मनी दैट यू हैव, believe me, the idea is to empower youth. That is the idea ultimate. The bottom line of NRF is to empower youth. जब तक हम कहते हैं कि 66% of the country, 66% of the population is less than 35. साइंटिस्ट को ही उस 35 के बिलो जो साइंटिस्ट को मौका मिलना चाहिए। ये this age is not for old people. They are done. They can contribute in the way they can. They can't dictate youth. Youth has to find its own way. Youth has to drive the science, and that is the whole bottom line of the crux of the NRF initiative. I think I have to finish here. Thank you very much.
breathe it out. I think we all are very lucky to listen to Dr. Akhilesh Gupta ji, and today it is his birthday. So many Great. Excellent talk, inspiring, and I'm very sure that with this talk, many young kids, those who are in this room today, will not only be understanding about the country's research future, but also will carry that into your heart and make sure that you become integrity, discipline, and hard work. And the age, if it is with you, you can win the whole world. And the way Dr. Gupta spoke at the age of 60, because of that energy. Okay? Thank you very much. Thank you so much. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir, for an interesting talk. I think this was the need of the hour. Thank you so much for sparing time from your busy schedule. Now I request our Director, sir, to present a token of respect from our NIT family.